My name is Kevin. I'm from London, UK. I'm really happy to take my new voice. My problems definitely motivate people who are suffering from similar situations. are you high pitch voice problem? तो अभी तो सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, वॉइस में काफ़ी फर्क आ रहा है. Okay. I actually had this surgery a month back, and you said I'll take it as a challenge and I'll give you your voice back without any invasive procedures. After surgery, I have vocal cord paralysis. And now I can speak normal. I feel good. Hi, I'm Cyrus. Hi, my name is Cyrus. Hi, I'm Chong. Now my voice has recovered and improved. इसलिए मुझे बहुत ही प्रॉब्लम, मैं पहले से ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूँ. My name is Shiraldin from Warangal. And I'm very happy that I'm speaking like a normal people with a bass voice like male. So I'm having this voice problem. I spoke with a few of my friends and they found reasonable changes in my voices. I've been facing difficulty in speech. You are able to speak words properly and sentences properly. Just you try to say something. Treatment the same day. After 2 hours, I got my voice. Hello friends, welcome to our YouTube channel SLP Sanjay Kumar Voice Therapist, and today we are before treatment live with Gurvinder Kaur, and she is having voice problem due to right vocal cord paralysis. Gurvinder Kaur, you can unmute your mic and tell about yourself, what exactly problem you are facing. Hi, I'm Gurvinder Kaur. I am my right vocal cord paralyzed. I can't speak properly because of my vocal cord. This happened after my surgery. I'm originally from Punjab, but I'm living in Canada. Okay, thank you. We'll helping you by online voice therapy. You are in Canada, I'm in India. In fact, my clinic is in Bangalore, but still I'm not in Bangalore at this moment. I'm out of station, but I'll be helping by online voice therapy. Thanks for your faith. And we'll be talking all those details. And what are the other services we have at our center? So those who are watching this live, please be connected with us. And in fact, I'll be giving some few tips about like how to keep your voice healthy. So please be connected with us. So let's first start the why this problem occurs. To understand this problem, first I'll be discussing about the normal speech production mechanism. Once you know the normal speech production mechanism, it will be easier for us to understand abnormal. So for normal speech production, first thing is the thoughts that comes in the brain. Then we take air, that air goes to the lungs. When we breathe out, we put air pressure below the vocal cord. Here we have larynx. Inside the larynx, we have two string-like structures known as vocal cords. So once you put air pressure below the vocal cord start moving like a string of a violin, and guitar and sounds will generate. Then we modify that sound into different sound with the help of our articulators. Like lips, tongue, jaw, teeth, palate, these are known as articulators. They help us to produce a specific sound. For example, if you want to say paw, both the lips will coming closer together and touching each other. When you want to say the tongue will come between the teeth. So when you say a one sentence, so many things happen at a time. Thoughts come, we take breath, we put air pressure below the vocal cords move, sounds generate, we modify that sound into different sound. In one sentence, there are so many words. In each word, there are so many sound. Each sound has its own place, own manner of articulation. So speech production is a quite complex process. In this process, there are hundreds of our body muscles works in a very, very coordinated way. If you know, coordination among these muscles goes, fluency goes. That can be seen in case of stammering. But here the Gurvinder Kaur is having vocal cord paralysis. In fact, she is having the right vocal cord paralysis, and that developed after the thyroid surgery, thyroidectomy. And so vocal cord paralysis happened because of some surgery
some trauma, some viral infection, some bacterial infection, and sometimes idiopathy. The reason, we don't know exactly the reason. The nerve which supply to the vocal cord, technically we call recurrent laryngeal nerve. That is a branch of vagus nerve called 10th cranial nerve. So due to the trauma or during the surgery, if that nerve get damaged, the vocal cord get paralyzed. So when we speak, like suppose if I am saying, so what will happen? Both the vocal cord will vibrate, and at the same time they will come closer together each other, and there will be a very small gap, and the air will come out. Suppose in your case, in the Gurvinder Kaur's case, right vocal cord is paralyzed, and if she is speaking or simply saying so what is happening? Right is not moving, only left is moving, and because of that there is a gap creating, and technically we call phonatory gap, and because of that gap lots of air are getting escaped, and the energy which was supposed to utilize for the vibration of the vocal cord, so now air is getting escaped, so the amplitude of the vibration of the vocal cord is less, and when the amplitude of vibration is less, the loudness will be the less. So she is facing loudness issue, air is escaping, so the breathiness issues, and so soft voice and breathy voice is having, and both the vocal cords are not in unison, so she is feeling hoarseness also. And what we do in this speech therapy or voice therapy, in fact we will be giving all the session by online voice therapy. So what we do in the online voice therapy, so the medium of instruction in online voice therapy will be the by mode of online, but technique will be the same, what we give online and what we give offline. So what will be the therapy goal? If I'll bring, suppose with the vocal exercise, if I can stimulate the right vocal cord which is paralyzed, then it will start moving, and the gap between the vocal cord will reduce, and the voice quality will improve. Amplitude of vibration will be more, and loudness will be more. But there can be situation where I will not be able to move the paralyzed vocal cord. So what I will be doing, I'll just bring the left vocal cord more closer towards the right one, and in that situation also the phonatory gap will reduce. And if gap will reduce, then the air wastage will reduce. So the amplitude of vibration of the vocal cord will increase, and finally the voice quality will improve. So this is the biophysics behind the problem. And so I was telling, I'll be also talking about like other communication disorder for which we have the services. To understand that, I'll be suggesting those who are watching this live, please refer our YouTube channel playlist. You'll find the different playlists for the different communication disorder, and all the playlists will be having pre and post treatment videos. So if you'll explore our YouTube channel, you'll find the playlist of the vocal cord paralysis patient, high pitch voice, puberphonia, stammering, spasmodic dysphonia, sulcus vocalis, phonatory gap, muscle tension dysphonia, stroke, after stroke which happened, aphasia, after doing the hearing testing when we dispensed the hearing aid, fitted the hearing aid, how the communication improved, pronunciation problems. So all this video you'll be able to find. And the other thing I was talking, like I'll be talking about the treatment duration as well. So for that, I'm giving the clue how to find the treatment duration. Of course, treatment duration vary patient to patient, but if you are interested in the vocal cord paralysis patient, how much will be the treatment duration? So I'll suggest, please refer our YouTube channel playlist and watch many videos instead of one video. And every videos I'll be telling before starting the treatment, the date, and when we'll finish the treatment, we'll be telling the date. So once you watch, you'll come to know that. So I want you to do some exercise to understand the treatment duration. And I was talking, decided if you drink plenty of water, water is a very good lubricant. So I can suggest 12 glass or 15 glass also, means nearly about 12 glass of water every day you should drink. And of course water is a very good lubricant. And avoid throat clearing. Sometimes people will say like if you do lots of throat clearing, there will be strain in the vocal cord, and that may damage. So what I'm telling, it is equally helpful for the people having communication problem and those people who are not having any communication problems, so they can keep their voice healthy. Avoid smoking. Smoking may result into the vocal cord polyp, sometimes cancer, so that may damage the voice and the vocal cord and voice quality. And if you're a teacher or singer, so you are a professional voice user. For example, if you're a teacher and you have to take lots of classes and all, and classroom is big, so ask your administration to provide the amplification device. So you should not put the more strain on the vocal cord. And if you're in a party where the background noise is more, and if you speak more and more, then you need to put lots of stress and strain on the vocal cord, and that may damage the voice and the vocal cord. So summary is, drink plenty of water, avoid throat clearing. Sometimes people say that also create the damaging the vocal cord, more stress and strain on the vocal cord.
and avoid whispering. Sometimes people will talk, my name is Sanjay Kumar, something like that, whispering. So that also create more stress and strain. So avoid whispering and talking, and drink plenty of water. And if you have any voice problem, meet to the healthcare professional, those who are expert in this field. And yeah, so if you'll apply this technique, you can keep your voice healthier for longer duration. So these are the suggestions I wanted to give. And whenever you have any communication problem, always take help from the certified professional. Certified professional means the people who are really trained in the field of speech and hearing sciences. If you are taking speech and hearing services, because taking help from the healthcare quacks or taking help from by self, by watching something, reading in the Google and then doing, may damage voice and the voice quality. I have seen some patient who was having a pitch problem, and he did some wrong exercise under the guidance of some people who are not really professional, and he developed the vocal cord paralysis. So pitch problem converted into the vocal cord paralysis. So always take help from the professional who are really trained in this field. So the question is, how I'll be knowing that who is the real professional, who is the fake professional? So whenever you're going to take speech therapy, voice therapy, or audiological services, first thing in your mind should come, your professional has to whom you are going to take treatment, from where he has studied, degree or something they can write from A to Z letter, anything. But if they will be fake, they will not inform the college name. So first question should come in your mind is, what is the college name where he has studied? Then the degree, graduation or post-graduation. So in India, people who are having a graduation degree in the speech and hearing science, they also can practice as a speech language pathologist and audiologist. But in the USA, at least you should have a master degree to practice as a speech language pathologist. So first is the college, next is the degree, and if he is having the post graduation degree or only the bachelor degree, and then which year he got the degree, if he is registered in the RCI Rehabilitation Council of India, if he is registered, registration number is there or not. So try to find out if you are seeing any social media page, website. So try to find all this information. And if they have hidden this information, then there is a chances your person may be fake or healthcare quacks maybe. तो मैं ये कहना चाह रहा था कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जब भी आप स्पीच थेरेपी, वॉइस थेरेपी लीजिए तो एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल से लीजिए. तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम जानेंगे कैसे सर्टिफाइड प्रोफेशनल कौन है और कौन जो है झोला छाप या हेल्थ केयर क्वैक्स है. तो जब भी आप स्पीच थेरेपी, वॉइस थेरेपी या ऑडियोलॉजिकल सर्विसेज लेने जा रहे हैं, तो आपका ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट फेक है या असली है, ये जानने के लिए पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो व्यक्ति किस कॉलेज से पढ़ाई किया है पहला, फिर क्या डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की डिग्री है या ग्रेजुएशन तक की डिग्री है, किस वर्ष उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की, फिर रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, अगर रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है. कई बार फेक लोग फेक ABCD कुछ भी डिग्री लिख सकते हैं, लेकिन कॉलेज का नाम फेक लिखने में डरेंगे. तो इसलिए पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, कॉलेज का नाम क्या है जहाँ से पढ़ाई की है. तो इस तरह से आप झोला छाप व्यक्ति को पहचान सकते हैं. और कभी भी ट्रीटमेंट लीजिए तो एक प्रोफेशनल लीजिए. आपकी वॉइस बहुत ही कीमती है, आपका वोकल कॉर्ड्स बहुत ही कीमती है, तो इसलिए हमेशा प्रोफेशनल से लीजिए और सेल्फ ट्रीटमेंट भी नहीं ट्राई कीजिए. गूगल जो है किसी भी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट या किसी भी डॉक्टर का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है. मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, क्यों नहीं हो सकता है. जब आप हमारे पास अधूरी नॉलेज रहती है, तो मेरे एक फ्रेंड ने जब वो पैथोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी तो बता रही थी, जब MBBS में थी, तो कि क्या हुआ कि जब मैं सारे डिजीज़ के बारे में पढ़ना शुरू किया और सोचना शुरू किया कि वो डिजीज़ मेरे अंदर है कि नहीं. बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रहा हूँ. तो लगता था कि सारे डिजीज़ मेरे अंदर में हैं. जब हमारे पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन रहते हैं तो इसी तरह से होता है. तो आप कहीं भी गूगल में कोई वीडियो देख लिया, गूगल में पढ़ लिया, तो खुद से डॉक्टर या स्पीच थेरेपिस्ट या स्पीच पैथोलॉजिस्ट बन के खुद से सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें तो बेहतर है, नहीं तो वॉइस और वोकल कॉर्ड डैमेज हो सकती है. तो मैं अवेयरनेस पे काम करते रहता हूँ और पूरी दुनिया में मेरी कोशिश रहती है कि इस फील्ड के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करूँ. इनफैक्ट मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था 2010 में और लगभग 15,000 के आसपास लोग सब्सक्राइबर्स भी हैं. तो मैं सोशल मीडिया का सहारा लेता हूँ पूरी दुनिया में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और लोगों के जीवन में जो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर से ग्रसित हैं उम्मीद जगाने के लिए. और इनफैक्ट ये मेरी कोशिश पहुँच रही है इंडिया से बाहर भी. दुनिया का कोई भी ऐसा महादेश नहीं बचा है जहाँ से लोगों ने हमारी सर्विसेज नहीं ली है. तो थैंक यू इतना प्यार देने के लिए जो लोग इस लाइव को देख रहे हैं. और मैं अंत में फिर से कहूँगा, गुरविंदर कौर, जस्ट टेल अस व्हाट एग्जैक्टली प्रॉब्लम यू हैव, हाउ इट डेवलप्ड, एंड
why you decided to take online voice therapy from me. Unmute your mic. Hi, my name Gurvinder. Actually, I have surgery of thyroid removal. So उसके साथ मेरी आवाज़ चली गई है, जैसे कि आप सुन रहे हो. तो मैंने यहाँ पर बहुत ट्राई किया, लेकिन किसी के साथ फ़र्क नहीं पड़ा. तो फिर मैंने सर्च किया ऑनलाइन और आपके बारे में पढ़ा, बहुत सारी वीडियो देखी. तो फिर मैंने मन बनाया कि मैं आपके साथ ऑनलाइन सेशन लूँगी. सो मे बी दैट कैन हेल्प मी. तो अभी आप कहाँ पे हैं, कहाँ पे ट्राई किया? बोल रहे हैं कि इसकी नहीं होती. उन्होंने बोला है कि वेट ही करनी पड़ेगी, जब तक वेट कर सकते वेट करो जी, अपने आप ही ठीक होगी. तो आपके डॉक्टर, कनाडा के डॉक्टर ने सर्जरी के लिए भी सजेस्ट किया था ना आपको? ये सर्जरी उन्होंने थायराइड की है और अभी दूसरी साइड थायराइड की करनी है, लेकिन जब तक आवाज नहीं आती वो कर नहीं सकते. अच्छा अच्छा, ठीक है, आपने हम पे भरोसा किया और इनफैक्ट आप कनाडा में हैं, मैं इंडिया में हूँ, इसके बावजूद भी. और मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे जो लोग भी इस लाइव को देख रहे हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे. मोहम्मद लिखते हैं, एनी फ्री वॉइस टिप्स टू कीप ए नाइस वॉइस ऑल टाइम. सो ऑलरेडी आई स्पोक, टू कीप योर वॉइस हेल्दी, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर and avoid throat clearing like that create more stress. And if you have any voice problem for more than 2 weeks, meet to a certified professional for detailed evaluation, and then you can follow the instruction. And don't shout. If you are shouting, you are creating more stress on the vocal cord. Shouting is a kind of vocal abuse. If the background noise is more, so try to avoid to speak more and more, because if background noise is more, if you speak, you have to raise, and continuous raising the volume and putting stress may damage the voice and the vocal cords. And whispering like my name is Sanjay Kumar, something like whispering also create more stress and strain the vocal cords, so you can avoid that. Frequent throat clearing. So that was the question of Muhammad. And next is Ankit is saying मुझे भी ये प्रॉब्लम है. तो अंकित मंडल, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये प्रॉब्लम का मतलब क्या है. तो आप हमें कॉल कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें कॉल करेंगे, आपकी आवाज़ को सुनेंगे, समझेंगे, फिर हम गाइड कर पाएंगे कि क्या हम कर सकते हैं. प्रसाद इज सेइंग हाय सर. हाय प्रसाद, हाउ आर यू? प्रसाद के इसलिए लिखते हैं, सर सेम प्रॉब्लम, 7 years completed. ओके प्रसाद, इफ़ यू हैव एनी, इफ़ यू नीड एनी सपोर्ट, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस. थैंक यू सो मच. एंड शिव कुमार इज सेइंग, सर मुझे फीमेल वॉइस पतली है एंड धीरे आवाज़ निकलती है. तो शिव कुमार जी, आप हमें कॉल कीजिए, आपकी आवाज़ को हम सुनेंगे, समझेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ टेस्ट के लिए रिकमेंड करेंगे, फिर हम गाइड कर पाएंगे कि हम लोग हेल्प कर पाएंगे या नहीं, और क्या हेल्प कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट ड्यूरेशन क्या हो सकता है. इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे. सो प्लीज़ फॉर कॉन्टैक्ट डिटेल प्लीज़ रेफर द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल जानने के लिए पहला स्टेप है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको हमारा वेबसाइट मिलेगा, वेबसाइट पे क्लिक कीजिए, रीच मी, आपको हमारा ईमेल आईडी मिलेगा, कॉन्टैक्ट नंबर, गूगल मैप पे क्लिनिक कहाँ पे सिचुएटेड है, सारी चीज़ें मिलेंगी. सो थैंक यू शिव कुमार जी फॉर आस्किंग क्वेश्चन. एंड नारायण राणा लिखते हैं, सर मुझे आवाज़ प्रॉब्लम है. तो नारायण राणा जी, आवाज़ प्रॉब्लम कहने से चीज़ें थोड़ी क्लियर नहीं हो रही है, क्या प्रॉब्लम है. तो आप हमारे इस वीडियो के कॉन्टैक्ट के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको हमारा वेबसाइट मिलेगा, क्लिक कीजिए रीच मी, फिर आपको हमारा ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, गूगल मैप पे क्लिनिक कहाँ पे सिचुएटेड है, सारी डिटेल्स मिलेंगी, फिर अपने कॉल कीजिए, फिर हम आपको गाइड कर पाएंगे. तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग अस. और युधिष्ठिर पटेल लिखते हैं, सर आई एम सफरिंग फ्रॉम प्यूबरफोनिया एंड आई एम 17 years ओल्ड, प्लीज़ हेल्प मी. युधिष्ठिर पटेल जी, डायग्नोसिस का काम, just give the responsibility of diagnosing the problem to us, because sometimes people say I have X problem, and when we do assessment we found patient is having Y problem, and with saying Y problem we will do the assessment, we find Z problem. So please call us, and if you have any reports, please share with us by email, and then we'll be guiding you in a better and more effective manner. So you may be true, but without the perceptual evaluation, we'll not be able to comment more on your problem. So thanks to Yuধিष्ठिर Patel for contacting us. Please call us. And
Rishabh Pandey is saying, sir, I am 17 years and I have a little bit Puberphonia. So Rishabh Pandey, again, suggestion for you is please call us. Once we'll listen your voice, and if needed, we'll suggest certain tests, and then we'll be able to comment what exactly problem you have. Sometimes patient will be saying, I have a stammering, and when we do the detailed evaluation, we find they are having misarticulation. Sometimes patient will be saying, I have misarticulation. When we do the evaluation, we find they are having stammering. So same way it can happen with you also. So let us diagnose instead of self-diagnosis. So please call us for perceptual evaluation. If needed, we'll suggest certain tests. Rishabh Pandey, can I treat it at home by myself? I have seen self-treatment may damage voice and the vocal cords, so we don't suggest self-treatment because there is always risk. If you are not taking voice therapy under the supervision of a professional, doing right exercise in wrong way or doing wrong exercise for a particular problem, both are harmful. So जैसे कि एक गाना है लता जी ने बड़े अच्छे से गाया है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन काफ़ी बजते रहते थे मेरे स्कूल डेज में। तो उन्होंने जो गाना गाया है, अगर कोई एक पेपर पे लिख करके दे किसी को, तो वो उनके जैसा नहीं गा सकता। वो एक सिंगर, प्रोफेशनल सिंगर ही उस तरह की आवाज़, सुंदर आवाज़ में गा सकते हैं। तो अगर आप कोई वॉइस थेरेपी से रिलेटेड कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं या कुछ आर्टिकल पढ़ते हैं, हो सकता है वो सही भी हो, लेकिन सपोज आपको पता लग गया कि ये वोकल एक्सरसाइज करनी है, लेकिन वो वोकल एक्सरसाइज कैसे करनी है, जैसे कि आप गाना सिंगर की तरह नहीं गा सकते, तो विदाउट सुपरविजन वो अगर एक्सरसाइज आप प्रॉपर वे में नहीं करते हैं तो वॉइस और वोकल कॉर्ड ख़राब हो सकती है। तो इसलिए मैं सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए मना करता हूँ। तो मेरा यही सजेशन है। और यश कुमार लिखते हैं यू आर आउट ऑफ स्टेशन। बिल्कुल सही बोला यश कुमार जी, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ और हम सेकेंड में से को फिर बैंगलोर पहुंच रहा हूं, लेकिन गुरविंदर कौर जी का बहुत ही मोटिवेशन था कि इनका थेरेपी स्टार्ट किया जाए और उनके मोटिवेशन के आगे मैं नतमस्तक हुआ और मैंने स्टार्ट किया थेरेपी ऑनलाइन। तो बिल्कुल मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन, आपने सही कहा। और मेहताब कुरैशी लिखते हैं सर मुझे वोकल कॉर्ड पॉलिप है। तो मेहताब कुरैशी, वोकल कॉर्ड पॉलिप में वॉइस थेरेपी से लिमिटेड ही फ़ायदा होगा। तो आपको 2 लोगों से मिलना होगा, ENT सर्जन और वॉइस थेरेपिस्ट, और दोनों के गाइडेंस में आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। वोकल कॉर्ड पॉलिप ज़्यादातर बड़ा ही होता है साइज़ में, और अगर साइज़ बड़ा है तो सर्जरी करानी पड़ती है, फिर उसके बाद जो है वॉइस थेरेपी, नहीं तो फिर से दोबारा हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ENT सर्जन के भी टेस्ट में रहिए और वॉइस थेरेपिस्ट दोनों के। और चंद्रशेखर लिखते हैं आई हैव स्टैमरिंग प्रॉब्लम, द ट्रेनिंग इज़ अवेलेबल इन कनाडा। तो I have a stammering problem. So Chandrasekhar, we have the facility of treating the stammering, and of course in the stammering after speech therapy we have seen the improvement. So of course our team knows Kannada, and so you can contact us for the detail. And Mehtab Qureshi is the polyp की surgery के बाद क्या कोई problem आएगी sir? Yeah, that you can discuss more about the surgeon. What complication can happen, because vocal cord polyp may require surgery, so your surgeon will give you better guidance. And of course after surgery, if you are not taking voice therapy, it may reoccur, so you should take help of both the professional together, like ENT surgeon as well as speech language pathologist, or better will be there where the ENT surgeon and the speech pathologist are working in a team. So for vocal cord polyp management, that place will be the better place. And so thank you all for joining us and watching us, and we'll stop this live. If you have any question, any suggestion, please write in the comment box, and we'll try to give answer in the next live or when we'll be uploading the next videos. So thank you all, love you all, thank you so much, and thank you गुरविंदर कौर जो आप लाइव हुए हमारे इस थेरेपी से पहले। और इनफैक्ट मैं जो अवेयरनेस के लिए जो चीज़ें क्रिएट करता हूँ, एक अवेयरनेस ग्लोबल लेवल पे, उसमें आपने हमारा सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। और एक बार 1-2 लाइन में अपनी प्रॉब्लम को समराइज़ कीजिए, हम इस लाइव को स्टॉप करेंगे, और माइक को अनम्यूट कीजिए। आपका माइक म्यूट है, आई थिंक माइक म्यूट है, माइक को अनम्यूट कीजिए। हेलो।